Good afternoon, everybody. Dear students, last class we have already discussed about methods of differentiation and differentiation of an implicit functions. ताले methods of differentiation रे आमे दीटा मेथड डिस्कस करथिले. से दीटा मेथड होची कोन ना differentiation by substitution and another method differentiation using logarithms एवं implicit functions रो मध्य derivatives आमे बाहर करथिले. Today we will discuss about differentiation of parametric functions. Parametric functions काकू आमे कहिबा. Differentiation of a parametric functions. Differentiation of a parametric functions. Differentiation of a parametric functions. तले parametric functions रो differentiation करिया बा derivative करिया तो parametric functions काकू कहा जाए. In the relation y is equal to fx or f of xy is equal to 0 if we write x and y in the form of a third variable then the form so obtained is called a parametric function, and the third variable is called a parameter. The third variable is called a parameter. Third variable is called a parameter. ताले parametric function आगे काकू कहबा बुझिया को पड़िबो. In the relation y is equal to fx or f of xy is equal to 0 if we write the variables x and y in the form of a third variable, then the form so obtained is called a parametric form by parametric function, and the third variable is called a parameter. ताले third variable टा को आमे कहिबा parameter. ताले parametric form of आमे देखिबा एग्जांपल नेबा. Parametric form of example आमे नहीं परिबा. Parametric form of the equation x square plus y square is equal to r square, or x is equal to r cos t and y is equal to r sin t. Here t is called a parameter
here t is a parameter. t is a parameter. चले x square plus y square is equal to r square is an equation of a circle with radius r. जदि आमे एठी x परिवर्ते लिखिबा r cos t एवं y परिवर्ते लिखिबा r sin t ताले लेफ्ट हैंड साइड रे पुट कले r स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर t r स्क्वायर कॉमन नेले cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t हमें पाइबा ताले cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 देयरफॉर r स्क्वायर हमें पाउछंती ताले LHS रे पुट कले RHS रे हमें पाउछंती देयरफॉर द पैरामीट्रिक फॉर्म or parametric equations of x square plus y square is equal to r square r cos t and r sin t. In general हमें general case रे नेबा in general let x is equal to phi t and y is equal to psi t. These are two functions with parameter t. ताले parameter t को नहीं हमें दीटा फंक्शन पाइले x is equal to phi t and y is equal to psi t. From this we will get कौन पाउछंती ना that implies dx by dt is equal to phi dash t and dy by dt is equal to psi dash t. चले x टा t रूपरे अछि एवं y टा मध्य t रूपरे अछि. Phi and psi are two differentiable functions of t. तेणु t रूपरे थिबारु आमे एठी पाइले dx by dt is equal to phi dash t and dy by dt is equal to psi dash t. But our aim is to find out dy by dx. Now dy by dx आमे बाहर करिवा dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. dy by dt into dt by dx, which can be written as dy by dt into 1 by dx by dt. This equal to dy by dt is psi dash t by dx by dt is phi dash t. Phi dash t. तेणु कौन सी क्वेश्चन जदि x एवं y रूपरे देई थाए तले हमें जानिबा जे सेटा होची पैरामीट्रिक फॉर्म. से पैरामीट्रिक फॉर्म थिले हमें dy by dx किबडी बाहर करबा. दिस इज बाय द चेन रूल. चेन रूल अनुसार dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx, which is equal to dy by dt into 1 by dx by dt, which is equal to psi dash t by phi dash t. तेणु याकु नहीं आमे गोटाए एग्जांपल करिबा केमिति क्वेश्चन आसीबो. क्वेश्चन केउ फॉर्म रे आसुची आमे देखिबा. तले ए फार्मूला को मने रखिले आमे क्वेश्चन सॉल्व करि परिबा. एग्जांपल फाइंड dy by dx if x is equal to a into cos t plus t into sin t and y is equal to a into sin t minus t cos t. चले this is an example in the form of parametric form रे याकु दिया हेची सॉल्व करबा केमिति.
solution. Given that x is equal to a into cos t plus t sin t. Now differentiating with respect to t, that implies dx by dt. एठु हमें पाइबा dx by dt. a is constant, तेणु ताको आउटसाइड को नहीं आसीबा. cos t रो डेरिवेटिव केते ना माइनस sin t plus this is the product of two functions t into sin t, that is first function t into derivative of sin t is cos t plus sin t into derivative of t is 1. Therefore this equal to a into minus sin t plus t cos t plus sin t. Minus sin t and sin plus sin t cancel. That implies we will get, that is a into t cos t. A into t cos t. Now from second हमें सेकेंड को कौन पाउछन देखिबा. तले y is equal to a into sin t minus t cos t. Differentiating both the sides with respect to t, हमें कौन पाउछन दी. That implies dy by dt is equal to a into sin t रो डेरिवेटिव है cos t minus first function t into derivative of cos t is minus sin t plus cos t into derivative of t is 1, which is equal to कितने पाउछंती ना a into cos t plus t sin t minus cos t. Now plus cos t minus cos t cancel. This equal to a into t sin t. तले हमें पाइले dy by dx by dt and dy by dt. तले वर्तमान देखिबा by chain rule कौन पाउछन देखिबा. our aim is to find out dy by dx. तले dy by dx हमें बाहर करिबा. केते हबो देखिबा. तले dy now dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt, which is equal to dy by dt हमें पाइछंती a t sin t by dx by dt पाइछंती हमें केते ना a t cos t. Now a and t cancel, which is equal to sin t by cos t, which is equal to tan t. This is the result. तेणु पैरामेट्रिक फॉर्म रे जदि ए प्रकार क्वेश्चन थाए ताले हमें ए प्रकार सॉल्व करिबा. प्रथम रे बाहर करिबा dx by dt, सेकेंड रे बाहर करिबा dy by dt. तापरे dy by dx is equal to dy by dt by dx by dt, which is equal to value put करिबा एवं आंसर पाइबा. That's all about your parametric form. तले याकु नै गोटे एक्सरसाइज आसीची, से एक्सरसाइज को हमें अटेंड करिबा एवं सॉल्व करिया को चेष्टा करिबा. वर्तमान देखिबा आउ गोटिए, that is differentiation of
a function with respect to another function. Differentiation with respect to a function. With respect to a function. तले या पूर्व आमे पढ़ुथिले differentiation with respect to a variable, but here we will discuss differentiation of a function with respect to another function. अर्थात दीटा फंक्शन दरकार आमे ए पर्यंत पढ़िथिले कोन ना डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन अर्थात y इक्वल टू जदी fx हुए ताले dy by dx बाहर करथिले dy by dx बाहर करथिले काहे कि ना एठी x गोटिए वेरिएबल y गोटिए वेरिएबल तेनु आमे dy by dx बाहर करथिले किंतु वर्तमान पढ़िबा डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन तेनु दीटा फंक्शन हमकु नेबाकू पड़िबो तले दीटा फंक्शन लेबा लेट y is equal to fx and z is equal to gx be two differentiable functions. दीटा डिफरेंशिएबल फंक्शन आमे नेले y is equal to fx and z is equal to gx किंतु आमे बाहर करिबा कोन ना dy by dz डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन तेनु dy by dx बाहर करिबा एवं dz by dx बाहर करिबा तापरे आमे dy by dz बाहर करिबा फाइनली ताले प्रथम रे आमे कोन करिबा ना गिवन दैट y is equal to fx एटु आमे पाइबा जे dy by dx is equal to f dash x. Similarly z is equal to gx ताले that implies dz by dx is equal to g dash x. But our aim is to find dy by dz. Now dy by dz is equal to dy by dx into dx by dz which is equal to dy by dx into 1 by dz by dx which is equal to dy by dx हम पाइछन केते ना f dash x by g dash x तले चेन रूल अनुसार आमे लास्ट रे पाइबा dy by dz is equal to f dash x by g dash x एई फार्मूला को अप्लाई करले आमे इजीली गोटा प्रॉब्लम सॉल्व करि परिबा तेनु आमे प्रथम रे फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव करिबा एवं सेकंड फंक्शन को डेरिवेटिव करिबा एवं से दुटा को डिवाइड करि देले आमे कोन पाउचंती ना से दुटा को पाउचंती कोन अच्छा एटा आमे लिखिचंती dy by dz is equal to dy by dx into dx by dz is equal to dy by dx into 1 by dz by dx which is equal to f dash x by g dash x तले या को नै गोटा एग्जांपल करिवा गोटे एग्जांपल हमें देखिबा क्वेश्चन केमिति आसीबो एग्जांपल differentiate tan inverse x with respect to
cos inverse x. Differentiate tan inverse x with respect to cos inverse x. एठी tan inverse x गोटे फंक्शन एवं cos inverse x गोटे फंक्शन ताले गोटे फंक्शन को आ गोटे फंक्शन फॉर्म रे आमे डेरिवेटिव करिबा ताले यार सॉल्यूशन कले कोन करिवो ना प्रथम रे फर्स्ट फंक्शन टा को आमे धरिबा y let y is equal to tan inverse x and z is equal to cos inverse x. Now from first function dy by dx is equal to tan inverse x रो derivative 1 by 1 plus x square 1 by 1 plus x square and dz by dx is equal to that is cos inverse x रो derivative केते ना minus 1 by 1 minus x square root over. But our aim is to find out dy by dz. Now dy by dz is equal to dy by dx divided by dz by dx, which is equal to 1 by 1 plus x square by minus 1 by 1 minus x square root over, which is equal to हमें या को सॉल्व करले केते पाइबा ना 1 by 1 plus x square into minus 1 minus x square root over by 1, which is equal to minus of 1 minus x square root over by 1 plus x square. This will be the result. तेणु आमे यार आंसर एतिकी पाइले तेणु दीटा फंक्शन जदि देई थाए ताले प्रथम फंक्शन को नेबा y एवं द्वितीय फंक्शन को नेबा z. y को x रूप रे डेरिवेटिव करिबा z को मध्य x रूप रे डेरिवेटिव करिबा तापरे से दीटा को डिवाइड कर देले आमे आंसर पाई परिबा. ताले दैट्स ऑल अबाउट योर डिफरेंशिएशन. जो आमे डिफरेंशिएशन आरंभ करथिले ये होची डिफरेंशिएशन रो लास्ट क्वेश्चन. ताले आमे किंतु स्टार्टिंग जते बडे करिथिले चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. ताले कंटिन्यूटी आमे आगरु डिस्कस करिसंती केवल डिफरेंशिएबिलिटी आमे छाडी थिले से डिफरेंशिएबिलिटी आ कंटिन्यूटी मिसेई की वर्तमान आलोचना करिबा. ताले ता पूर्वरु मु कहिबी डिफरेंशिएबिलिटी अर्थात गोटाए फंक्शन डिफरेंशिएबल हबो केते बेले ना बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव आमे जानि चंती जे बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एटी मु आउथर लिखि दउची जे डिफरेंशिएबिलिटी and continuity. Differentiability and continuity. ए differentiability and continuity विषय आमे पढ़ी सारिछंती. आमे पढ़िथिले कोन ना if the limiting value and the functional value of a function are equal then आमे कहउथिले जे फंक्शन टी कंटीन्यूअस हबो. किंतु डिफरेंशिएबिलिटी पई आमे देखिबा कोन ना डिफरेंशिएबिलिटी रो डेफिनेशन होउची जे लिमिट h tends to 0 f of c plus h minus f of c by h is equal to f dash c. अर्थात if this limit exists then we will say or we will denote it that is f dash
सी ताले ए लिमिट एग्जिस्ट कले एफ डैश सी हमें पाउछंती किंतु एटा को पाइबा पई हेले प्रथम रे हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दीटा बाहर करिया को पड़िबो तापरे ए फार्मूला हमें यूज करिबा ताले राइट हैंड डेरिवेटिव कौन पाउछंती ना एफ डैश सी प्लस दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c plus h minus fc by h and left hand derivative that is f dash c minus this equal to limit h tends to 0 f of c minus h minus fc by minus h ये होची दीटा फार्मूला गोटे हला राइट हैंड डेरिवेटिव आ गोटे हला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तेनु आमे लिमिट केस रे जे भली पाउथिले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एवं उभय देखुथिले जदि समान होउथिला ताले तार लिमिट एग्जिस्ट करथिला अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट बोली कहूथिले सिमिलरली हियर जे राइट हैंड डेरिवेटिव एवं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दीटा सारा एग्जिस्ट करिवो एवं इक्वल हेले आमे से फंक्शन टाकू कहिबा डिफरेंशिएबल हला तेनु डिफरेंशिएबल हबो बोली कहिबा ताले आमे जेते बेले गोटा सॉल्व करबा को जिया प्रॉब्लम सॉल्व करबा को जिबा सेते बेले कोन करबा ना प्रथम रे डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करबा तापरे कंटिन्यूटी टेस्ट करबा हेले हमको इजी हे जिवो गोटे थ्योरम हम देखिबा गोटे थ्योरम देखिबा से थ्योरम कौन कहूची गोटे थ्योरम देखिबा if a function f गोटे थ्योरम if a function f is continuous at a point x is equal to c then it is if a function f is differentiable not continuous but differentiable if a function f is differentiable at a point x is equal to c then it is continuous at that point but the converse is not necessarily true तले थ्योरम कहूची if a function f is differentiable at a point x is equal to c then it is continuous at that point but the converse is not necessarily true that means every differentiable function is continuous but all continuous function may not be differentiable तेनु जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हेउथिबो सेटा कंटीन्यूअस हबो ऑटोमेटिकली किंतु समस्त कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हेई न पारे तले आमे यार प्रूफ करिबा जे if a function f is differentiable at a point x is equal to c तले देखिबा प्रूफ करिबा let f is differentiable
differentiable at x is equal to c. Then by the definition of derivative, by the definition of derivative, we have limit h tends to 0 f of c plus h minus fc by h exists and is equal to f dash c, and is equal to f dash c. ताले differentiable हेउथिबारु by the definition of derivative limit h tends to 0 f of c plus h minus fc by h exist. ए लिमिट exist कले ताकू हमें डिनोट करबा केते ना f dash c, तले सेटा को हमें f dash c लेखु छंती. तले देखिबा that is limit h tends to 0 f of c plus h minus fc by h is equal to f dash c. ताले ए जो fc कहउछन fc ता कोन ना fc होची फंक्शनल वैल्यू, fc होची फंक्शनल वैल्यू. तेनु ए लिमिट एग्जिस्ट कले ताकू हमें कहबा f dash c बा f dash c लेखिबा जोटा कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव आमे सेइथरु पाउछंती. now limit h tends to 0 f of c plus h minus fc is equal to limit h tends to 0 f of c plus h minus fc by h into h. आमे उभय लब एवं हर रे h टाको मल्टीप्लाई कले. नाउ दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c plus h minus fc by h into limit h टेंड्स टू 0 h. तले एतिकी हमें दीटा फंक्शन रे डिवाइड कले, अर्थात प्रथमटा हला लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c plus h minus fc by h, और सेकंड टा हला लिमिट h टेंड्स टू 0 h which is equal to. तले एटा में केते पाई चंती ना एटा पाई चंती f dash c. तले this equal to f dash c into limit h tends to 0 h, that is 0, which is equal to 0. Therefore LHS, limit h tends to 0 f of c plus h minus fc is equal to 0 हमें पाइले. That implies limit h tends to 0 f of c plus h is equal to fc. fc टाकू राइट हैंड साइड को हमें नहीं गले, तेनु राइट हैंड साइड को नहीं गले एति पाइले. This can be written as limit x tends to 0 f of x is equal to f of c. Here c plus h is equal to x. तेणु आमे कोन पाइले ना लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू. Therefore the given function is continuous. Therefore fx is continuous at x is equal to c. x is equal to c पॉइंट रे ए फंक्शन टा कंटीन्यूअस हला. तले एटा हमें गोटिए पार्ट प्रूव कले, किंतु थ्योरम रो सेकंड पार्ट कहूची
but the converse is not necessarily true. तार विपरीतटा ट्रू हेई न पारे. तेणु टू प्रूव द कन्वर्स we will take an example. ताले आमे कन्वर्स प्रूव करिया पाई हेले ओटा एग्जांपल नेबा. ताले एइथरु आमे जानिबा को पाइले कोन ना कंक्लूजन गोटे पाउचंदी आमे एठी मने रखिबा. conclusion, this is very important for 1 mark question. That is every differentiable function is continuous, but all continuous functions may not be differentiable. ताले प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटीन्यूअस हेई परिबो. जेते बेले हमें टेस्ट करिबा सेते बेले आंसर कला बेले हमें मध्य कहि देई परिबा. प्रथम रे डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करिबा, सेकंड रे कंटिन्यूटी टेस्ट करिबा. जदि डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट टू हमें पाई गले जे डिफरेंशिएबल हैला ताले हमें सेठी लिखि देबा वी नो दैट every differentiable function is continuous, therefore the given function will be continuous. एतिकी लिखि क्लोज कर देले मध्ये हबो. तेनु आमे जेते बेले ए प्रकार क्वेश्चन अटेंड करिवा प्रथम रे डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करिया पई आमे चेष्टा करिवा. ताले या को प्रूव करिया पई आमे गोटा एग्जांपल नेबा. थ्योरम रो कन्वर्स ताकू मध्ये प्रूव करिया पई सेही एग्जांपल दरकार. ताले टू प्रूव द कन्वर्स let us consider an example. ताले से एग्जांपल कोन कहूची ना so that mod x is continuous at origin and not differentiable at that point. ताले से कहूची mod x ता continuous हो at the point origin or that is the at the point 0 and not differentiable at that point. तेनु एई फंक्शन mod x continuous हबो किंतु differentiable हबो नाही. तेनु या को हमें देखिबा. प्रथम रे देखिबा कंटीन्यूअस होउची कि नाही. तले कंटिन्यूटी टेस्ट let fx is equal to mod x which is equal to x when x greater than equal to 0 and minus x when x less than 0. Now f of 0, that is functional value. Now f of 0 is equal to 0 mod is equal to 0. This is the functional value. Now
right hand limit, this equal to limit x tends to 0 plus mod x, which is equal to limit x tends to 0 plus x, कारण x टा पॉजिटिव थिबारु आमे x नेबा, तले this equal to limit h tends to 0 0 plus h, which is equal to 0. तेणु राइट हैंड लिमिट पाइले आमे 0. वर्तमान देखिबा लेफ्ट हैंड लिमिट. Left hand limit, this equal to limit x tends to 0 minus mod x, which is equal to limit x tends to 0 minus x, this equal to limit h tends to 0 minus of 0 minus h, which is equal to limit h tends to 0, h is equal to 0. तले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दीटा सारा एग्जिस्ट करला एवं इक्वल वैल्यू देला, दैट इज 0. तले since left hand limit is equal to right hand limit is equal to 0, limit x tends to 0 mod x is equal to 0. Also functional value is 0. Now therefore limiting value x is equal to 0 mod x is equal to f of 0 is equal to 0, and hence it is continuous. Hence it is continuous at x is equal to 0. तेणु एटा कंटिन्यूअस हैला. वर्तमान देखिबा तार डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट आमे करिबा. ये हैला कंटिन्यूटी टेस्ट. तले कंटिन्यूअस हैला. वर्तमान डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट देखिबा. डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट. Let fx is equal to mod x. Now that implies f of 0 is equal to 0 mod is equal to 0. Now right hand derivative, this equal to f dash 0 plus, this equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h minus f0 by h, which is equal to limit h tends to 0. This is तले f of 0 plus h. एटी जदि 0 plus h लिखिबा, एटी मध्ये 0 plus h लिखिबा. तेणु तार वैल्यू हम mod h, that is mod h minus f of 0 हमें पाई 0 by h. तेणु एथुर हमें पाउ कौन, this equal to limit h tends to 0 h by h is equal to 1. तले राइट हैंड डेरिवेटिव पाइले हमें 1. वर्तमान देखिबा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, this equal to f dash 0 minus
this equal to limit h tends to 0 f of 0 minus h minus f0 by minus h एटी पॉइंट टा हला सी जगह रे हमें 0 नै छंती तले this equal to limit h tends to 0 minus h रो mod by minus h रो mod by minus h this equal to limit h tends to 0 h by minus h is equal to minus 1 तेणु लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बाहरिला minus 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव बाहरिछि 1 since left hand derivative not equal to right hand derivative mod x is not differentiable at x is equal to 0 or at origin तेणु आमे देखिले जे mod x ता कंटीन्यूअस होउची origin रे किंतु डिफरेंशिएबल हेई पारिला नाही तेणु आमे जो कंक्लूजन रे पहुंची जंती एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल तेणु एही एग्जांपल रु आमे जानि पारिले तले दैट्स ऑल अबाउट योर डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी चैप्टर नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स तेबे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़िबा पूर्वरु किछि मिसलानियस एग्जांपल्स देइछि मिसलानियस एक्सरसाइज ते देइछि ताकू सब एग्जांपल को भलो भाबरे हमें पढ़िबा तापरे आगो को जिबा आज एतिकी थाउ थैंक्स।